Welcome to the Kitchen Experiment. I'm Jatin, your host, dost, and the man behind the experiment. For those of you joining me for the first time, आपका स्वागत है. आज हम बनाएंगे probably India's most popular dish, Hyderabadi Dum Biryani. So grab your aprons and तैयार हो जाइए to join me on this fun and mouth-watering adventure. The most important part, I think, as important as the meat, is the fried onions. उसी से उसकी मिठास आएगी मैरिनेशन के अंदर, एंड दम पे भी हम उसको यूज करने वाले हैं. लेट्स फ्राई इट. इसको अच्छे से छुट्टा डालना है अंदर. की खूबी मालूम है क्या है कि द ऑयल ऑल्सो गेट्स अ वेरी स्वीट फ्लेवर ऑफ द अनियन, एंड आप ये ऑयल यूज़ कर सकते हो बाद में दाल वगारने के लिए या सब्जी बनाने के लिए. एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है. So while the onions are frying, let's get our marinade ready. सबसे पहला चीज़ है हमें पल्स करना है papaya skins and raw papaya को, and also with some green chilies and with some water. The papaya skins are really important. जो tenderization आएगा मटन के अंदर वो papaya के skin से आने वाला है. लगभग 4 green chilies है, 2 एकदम तीखी वाली जो होती है एंड दो तीखी वाली 2 मीठी वाली. I don't like things extra spicy. I think वो काफी बाकी सारे flavors को overpower कर देता है. So just the right balance is 2 really spicy green chilies and 2 sweet green chilies. Let's pulse this. We don't have to make it very watery. Perfect. Just when the onions are golden brown, right? Don't get them dark brown, क्योंकि जब आप इसको निकालते हो that continues to cook. Golden brown, we need to take it out. आप paper towels में निकाल लीजिए इसे. Drain the oil well. This is how it needs to look. Golden brown. Okay. इससे dark color नहीं आना चाहिए. Our onions are ready. Our कच्चा papaya paste is also ready. अभी हमें ना मटन को मैरिनेट करना है. अगेन दिस इज एक कच्ची गोश्त की बिरयानी. दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ हैदराबादी दम बिरयानी. तो आपका जो मैरिनेशन है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी सीजनिंग, आपके मसाले, यू जस्ट गेट दिस वन टाइम, वन शॉट टू गेट इट राइट. प्रोपोर्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप बाद में एंड में जो डिस्क्रिप्शन आएगा, रेसिपी कार्ड आएगी, आप उसको प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा एंड देन वो एग्जैक्टली आप फॉलो करना. लेट्स मैरिनेट. देखिए मैंने भी ये सब यूट्यूब से सीखा है, तो परात यूज कर रहा हूँ क्योंकि one of the things I learned is they slap the mutton a lot. It probably gets the mutton extra tender, but तो परात is good. ज़्यादा mess नहीं होता. We'll take about half of the onions that we have fried. You can use a little more also. The remaining is reserved for the dum. Roughly 3 tablespoons of ginger garlic paste. 3 tablespoons of कश्मीरी चिली. अगर आपको चीज़ें थोड़ी ज़्यादा तीखी पसंद है, आप थोड़ा 1 tablespoon कश्मीरी की जगह आप कोई तीखी मिर्च भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो. दिस इज 2 teaspoons ऑफ जीरा पाउडर एंड 1 teaspoon ऑफ टर्मरिक. 1 tablespoon ऑफ कोरिएंडर पाउडर. लगभग 2 से 3 इंच का सिनेमन है ये, आप उसको थोड़ा स्मैश कर लीजिए. 5 to 6 cardamoms and about 8 cloves. 1 tablespoon गरम मसाला. ये मेरे घर का गरम मसाला है, आप स्टोर बॉट भी यूज कर सकते हो. 3 to 4 tablespoons of 3 to 4 teaspoons of salt. अगर आपको चीज़ें ज़्यादा नमकीन पसंद है, आप थोड़ा और सॉल्ट डाल दीजिए. 1 lemon. It smells great. A small bunch, roughly about 40 grams of coriander. The जो यूनिक पार्ट है ना इस बिरयानी की is that freshness of coriander that gets infused in the dum, in the meat. About 10 to 15 grams of mint, पुदीना. एंड आते हैं अभी हमारे टेंडराइजर पे. लगभग 5 tablespoons would be good. Which is rough little less than half a cup of it, and some
फ्रेशली ग्रेटेड नटमेग। अगर आप नटमेग पाउडर यूज कर रहे हो तो आप हाफ अ टी स्पून से ज्यादा मत यूज करना, बट फ्रेश नटमेग की जो बात है ना, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। oops, अभी चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ड्राई मसाला और जो हमारा पेस्ट है डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद we'll add some ghee to it, roughly about 5 tablespoons. You can never go wrong with ghee. थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए और ऐड कर दीजिए। एंड 300 ग्राम्स ऑफ कर्ड। हल्का सा आप इसको हैंग कर लीजिएगा ताकि इसका मॉइस्चर बाहर आ जाए, बट पूरा इसको ड्राई नहीं करना है। एंड या अच्छे से इसको मसाज कर लेते हैं। और मसाजिंग द मटन नाउ। So, थोड़े महीने पहले मैं हैदराबाद गया था एंड आई वेंट टू ऑल द फेमस बिरयानी रेस्टोरेंट्स देयर, शागाव, शादाब, बावर्ची। एंड मैंने एक शागाज के आउटलेट पे रिक्वेस्ट किया था कि अगर देख सकता हूँ वो कैसे बिरयानी बनाते हैं। सो दैट्स वेयर आई गॉट द इंस्पिरेशन ऑफ मेकिंग दिस। वन ऑफ द थिंग्स आई नोटिस्ड इज दैट जब उनकी मैरिनेशन हो जाती है ना, वो मटन को ऐसे हाथ में लेते हैं और पतीले में पीटते हैं। एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज कि ये क्या कर रहे हैं। एंड दे वर लाइक कि नहीं, आपको उसकी अच्छी मसाज करनी पड़ती है, जब उसको पीटते हो ज़्यादा टेंडर होता है। आई फील इट्स ट्रेडिशन एंड ट्रेडिशन फॉलो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलो पीटते हैं सर। आर मैरिनेड इज नाउ रेडी। इसको कम से कम 4 घंटा रखना है फ्रिज में, आप उससे कम नहीं रख सकते। तो बिरयानी इज अ लॉन्ग प्रोसेस, आपको अपना मैरिनेशन पहले तैयार करना है एंड द फाइनल कुकिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट 4 आवर्स मिनिमम। बेस्ट इज कि आप इसको ओवरनाइट रख लीजिए 12 घंटे। दैट टेंडरनेस एंड दैट फ्लेवर राइट इज गोना बी रियली ग्रेट। अभी तैयार कर लेते हैं हमारी पोटली। वाई पोटली? यूजली जब आप चावल उबाल रहे हो बिरयानी के लिए, आप सारे खड़े मसाले उसमें डाल देते हो। It's very difficult to then take it out, take the spices out of the rice before you put it for the dum. You can make your life simple. आप बस ये पोटली के अंदर डाल दीजिए। It's a cheesecloth. So for example, आपने अपना धनिया लिया, डाल दिया, mint. This is just small, 10-15 grams each, just for the flavor and the aroma. This is a mixture of star anise, shahi jeera, black cardamom, javitri, and also one thing that I do unique is, and this is from my exposure of cooking a little bit of Goan food also, is I add a few trifle to it. That is Sichuan peppercorn. Uski jo aroma aata na, and that sweetness, it is just takes it to another level. And let's get all of it in. Cinnamon, roughly about 3 inches crushed, and some pathar ke phool. Sounds like a movie, but okay. And all you need to do is just tie this up. अगर आपके पास ऐसा बैग नहीं है ना, you can just cut a small piece of cheesecloth and use a string to tie it up. Use an unbleached string, that would be better. Yeah. Our potli is ready. हमारा मटन लगभग 10 घंटे मैरिनेट हो चुका है। एवरीथिंग एल्स इज रेडी। We will be using about 750 grams of rice. I have soaked it for half an hour. पोटली भी हमारी तैयार है। एक नींबू का जूस and about 3 tablespoons of salt. The trick is to use 1 tablespoon per liter. It has to be extremely salty and अगर कम salt रहेगा ना, then आपके चावल में कोई टेस्ट नहीं रहेगा। बाकी जो हमारा So let's get the rice ready first. We have to cook it till 50% doneness. कड़क होना चाहिए क्योंकि ये कच्चे गोश्त की बिरयानी है। चावल हमें 75% कुक रहेगा तो एकदम मशी हो जाएगा। 40 to 50% is best. Water has started boiling. In goes the potli, lemon juice and the salt. चावल डाल देते हैं। 2 मिनट उबल चुका है ये। Spread it evenly. जैसे हमारा राइस बॉईल हो रहा है, जब तक वो बॉईल हो रहा है तब तक हम अपना बर्तन तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा घी डाल लेते हैं ताकि जस्ट 1 टेबल स्पून आप इसको इवनली स्प्रेड कर लीजिए। गुड इनफ। मटन आउट इन दिस।
get all of the good stuff in here. Great, this is done. Let's spread it. And abhi before we add the rice, right, what we will do is आप देख रहे हैं कि काफी ये थोड़ा सा सूखा सूखा है, it's pasty. We'll add 100 ml of this biryani water in it. That will add that salt, that flavor of the spices in it to it, and also it helps in building a very good dum. चावल हमारा ready हो गया, as you can see here. Just still has to have a bite. It's about 40-50% done. It's time to transfer it here. Before we do that, we'll add about 100 ml of this water. Okay, let's layer it. But before that, this is a magic trick of mine, or rather something to satisfy my mind. A sprinkle of kosher salt and evenly layer करना है, अच्छे से drain करना है राइस को. राइस आप चाहे तो बस किसी किसी लोगों को चावल ज्यादा अच्छा लगता है, कोई कोई लोगों को एक ऐसा लगता है कि मटन का प्रोपोर्शन ज्यादा होना चाहिए. सो अगर आपको मीट ज्यादा खाना है एंड चावल कम खाना है तो आप आधा किलो यूज कर लीजिए. अगर आपको चावल बहुत ही ज्यादा खाना है एंड मटन इज लेस, आपको थोड़ा आलू आलू डाल के उसको और जैज़ अप करना है, आप 1 किलो चावल यूज कर लीजिए. आई लाइक टू यूज 750. फॉर मी दैट्स द परफेक्ट रेशियो फॉर me and my family. As you can see, it's not more than 3/4. This is the perfect size. अभी हम ऐड कर लेते हैं हमारे finishing elements. About 7-8 tablespoons of kesar and milk. I just love the flavor and the fragrance of kesar. I'm using some Spanish saffron. Kashmiri saffron is also good. Whatever is available closest and ready at hand. Good enough. Spread it evenly. हड़बड़ी में नहीं करना है काम. About half a teaspoon of garam masala. Again, rain it down. ये एक fragrance अच्छी ऐड कर देता है. Some coriander. Roughly break the mint leaves. जो हमारा बचा हुआ fried onion था. I'm going to add a lot more because my mother really loves the taste of these caramelized fried onions. But थोड़ा आप इससे कम ही ऐड कर लीजिएगा. If you like onions, then why not? About 70 ml of ghee. Again, spread it evenly. And we're done. We say a prayer that everything turns out okay, and let's bind it. आटा थोड़ा गीला इस्तेमाल करना है. I'm not a very perfect one at it to make long strands, so थोड़ा चालू काम रहेगा ये इधर. Okay, I think this is good enough. I'm gonna bind it here first. Let's close our thing. Tightly press करना आप इसे, ताकि steam आसानी से escape नहीं कर पाए. Safety से I always add some of it on top also. थोड़ा बाद में साफ करने में झंझट हो जाता है, but the seal is quite good. This almost becomes like a pressure cooker. समय आ गया इसे दम पे रखने का. इसको पहले फास्ट गैस पे रखना है with a tawa at the bottom. The moment you can hear the sound of it, of boiling sort of a sound, and you can see some steam escaping. आप थोड़े इसको फिर धीमी आंच पे कर दीजिए, मीडियम टू स्मॉल. आपको roughly about 25 to 30 minutes तक उसको continuous रखना है, disturb नहीं करना है, and then you turn it off and let it be for another half an hour to 45 minutes. So I'm going to go to the kitchen and put this on the top. ऐसे fast gas पे रखना है. In my experience, it doesn't take more than 15 to 20 minutes for the steam to get generated in it. Our biryani is ready.
आधा घंटा जब एक बार उसका स्टीम बनने लगा था, लगभग उसमें 10 मिनट लगे थे, मैंने उसके बाद आधा घंटा उसको धीमी आंच पे रखा एंड देन आई जस्ट शट द गैस एंड लेट इट बी फॉर अनदर गुड हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स. खोल के देखते हैं कैसा बना है. Let's hope it's turned out well. Okay then. Yes. This just looks beautiful. चावल आप देख सकते हो खड़े हो गए. That means it's really fine. अभी देखते हैं. The real test is whether the mutton अच्छे से गला है या नहीं. Let's cut this. Let's plate it first. The fragrance of it. Perfect. एकदम मलाई की तरह बन गया ये. It smells amazing. Mutton is बहुत अच्छे से गल चुका है. चावल भी एकदम छुट्टे है. Just had a feeling that everything would turn out good today. Just some coriander for garnish. And Hyderabadi Dum Biryani served. It took us some time, but बोलता ना कि सबर का फल मीठा होता है. Well, in this case थोड़ा मसालेदार है. Before we say goodbye, please try this at home and let me know in the comment section how it went. Don't forget to share this recipe with people that you know and your family and friends. Also, most important, please press the bell icon to subscribe. Goodbye.